The national capital of India faces an AQI of above 300, which falls in the category of very poor. Recently, the Supreme Court stepped in again. Only vehicles with BS4 engines and above will be spared. Most 15 years old petrol vehicles and 10 years old diesel vehicle are usually BS3 and will now face action. The question is this a real enforcement or another temporary fix? Because Delhi has seen this every winter. Orders, bans, emergency meetings, and then silence. Look at China. Beijing once had the same choking smog. They shut coal plants, closed polluting factories, scrapped old vehicles, enforced the world's strictest emission norms, not for a season, but for years. China invested billions, tracked pollution in real time, held officials accountable, because clean air was treated as a right, not a public relations problem. Back in Delhi, governments play the usual blame game. The ministers in Delhi blame the previous government, stating that it's better than before. मुझे आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मुझे बहुत खेद के साथ आज कहना पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी जो 10 साल की बर्बादी जिनकी हम झेल रहे हैं, जिनका हर दिन पोल्यूशन आज के साल के मुकाबले ज्यादा रहता रहा, जो मैंने अभी भी आंकड़े बताए कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है, ये पिछले आंकड़ों से देखकर बताया। हमारे समय पे ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम यत्नशील हैं, लेकिन वो जानबूझकर पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए जगह जगह आग लगा रहे हैं। But on the ground, the anger of the common public exploded. At Arun Jaitley Stadium, the crowd didn't applaud. They shouted, AQI, Even Parliament couldn't rise above politics. Instead of solution, chaos. Instead of debates, blame. एक विषय रह गया था, हम लोग पोल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, अपोजिशन में मांगा था, बाद में कांग्रेस ने बोला कि पोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा किया तो पोल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा मलाल रह गया, लेकिन And while leaders argue, Delhi breathes poison. So this isn't about comparison anymore. It's about political will. Will tough rules actually be enforced? Will discomfort be accepted? Will long-term investment be made? Or will Delhi keep choking while governments keep talking?